dialogues between the master and the disciple has happened thousands of years back. The finite getting close to the infinite, the known reaching out to the unknown. What exactly is enlightenment? Someone says, I am enlightened. No, that is not enlightenment. I and enlightenment cannot go together. What are the special benefits of celibacy? Physical pleasure, if it is considered one unit, the pleasure or joy of samadhi is 1,000 times more than that. ये जो माया है उससे हम कैसे निकल सकते हैं? तुम ये तो नहीं पूछती हो ना, अच्छा मैं सपने से कैसे निकलूं? अरे सपना समझ में आ गया, फिर निकलने की क्या बात है? Gurudev, what exactly is enlightenment? What exactly is enlightenment? This word enlightenment is used, misused and misunderstood so many times. Someone says, I am enlightened. No, that is not enlightened. I and enlightenment cannot go together. Both cannot exist. So one who is enlightened, whenever this question is asked, they keep quiet. Silence. There is no two, and so there is no experiencer. I experienced enlightenment, this happened to me, that happened to me, is all misconception of enlightenment. Got it? So suddenly I felt everything is one with me, this or that. Yeah, but still that I is there. There is an experiencer and the experience they are having. So it's difficult to say. It's like saying I did not find myself. So I searched for myself, I did not find myself. Do you see what I'm saying? Gurudev, does enlightenment happen suddenly or is it a gradual process? Both. Sometimes it is sudden, sometimes it is a gradual realization. Both happens. Gurudev, many people have asked me this question. Is sannyasa a prerequisite for enlightenment? As in history there are many cases where married people also had to take sannyasa before attaining enlightenment. Sannyas is something which happens to one. Sannyas is a conscious decision to be centered. Sannyas is commitment to something higher. Sannyas is free from all smaller attachments. Sannyas is being centered in all circumstances. Sannyas is the vision of a higher goal in life. Sannyas is an expression of total contentment. Sannyas is not out of frustration. People leave things and run away to have sannyas. That I don't think is sannyas. भगोड़ीपन जो है वो संन्यास नहीं है. संन्यास माने जो सम्यक रूप से केंद्र में स्थित हो गए, एक बहुत बड़ा विजन लेके चले, एक विशाल दृष्टिकोण रख लिया और तृप्त हो गए. पूर्ण रूप से तृप्ति ही संन्यास का लक्षण है. हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ हूँ सब देने के लिए, ये उद्गार भीतर से उठे तो समझना संन्यास हो गया, संन्यास्त हो गए. अच्छा, गृहस्थी माने क्या है? जिम्मेदारियां निभाना, उनके लिए ड्यूटीज है, घर को संभालना है.
वो गृहस्थाश्रम के धर्म और गृहस्थाश्रम में रह कर के भी अपना कर्तव्य निभाते हुए भी कर्मयोग के द्वारा भी लोग मुक्त हो सकते हैं। और इसका बहुत सारे निदर्शन हैं। राजा जनक सबसे बड़ा उदाहरण है। राजा जनक ज्ञानी थे, मुक्त आत्मा थे, और वो पूरे देश के जिम्मेदारी के साथ वो अपना काम भी करते थे। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जो व्यक्ति सब जिम्मेदारी लेते हुए गृहस्थाश्रम में रहते हुए मुक्त हुए हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऋषि मुनि ये भी गृहस्थाश्रम में ही थे। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि अगस्त्य, ये सब बड़े बड़े महर्षि थे। ये सब गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपना कर्तव्य को निभाते हुए और मुक्त रहे। गुरुदेव, एक मछली जो सागर में रहती है उसके विस्तार का अंदाजा नहीं लगा सकती, तो हम इस चेतना में रहते हुए उस एनलाइटनमेंट तक कैसे पहुंचे? चाह मरी चिंता मरी, प्रभु मिले। प्रभु मिले तो हम कहाँ, वही छा गए, वही रह गए। तो इसका यही 3 संज्ञा में कहते हैं, वही है और कुछ नहीं है, या मैं ही हूँ और कुछ नहीं है, और जो है सो है, ना मैं ना तुम ना कोई, वही है। ये संन्यास है। बूंद में सागर समाया हुआ है, और बूंद को पहचान लिया तो सागर को जान लिया। और बूंद ये अनुभव करे मैं सागर का ही अंश हूँ, बात समाप्त हो जाती। बूंद अलग नहीं है फिर तो, है ना। अच्छा, ये कह देना अरे मुझको ऐसा हुआ वैसा हुआ, भाई तुम्हें जो भी हुआ तुम अभी भी तुम हो। तुम्हें लगता है मैं हूँ, तो जब तक मैं हूँ, वो है ना, प्रेम की गली अति साकरी तामे दो न समाए, यही बात है। कोई और नहीं है, कोई दूजा नहीं है, ये भाव ही मुक्ति है। Gurudev, monks in every tradition are required to be celibate. What are the special benefits of celibacy? Celibacy is conserving the energy. When you have conserved energy from one channel, that same energy is available for you to be used in other channels. Maharshi Patanjali also said, Brahmacharya pratishtayam virya labha. It gives strength, it gives energy for you to do many other things. To realize the self, you need a lot of energy. If you are weak, dull, what takes over you is inertia. And when you want to be more vibrant, you need more energy, and so you have to conserve energy. Enjoyment, whatever it is in all the 5 sensory pleasures, depletes our energy. If you keep looking at the screen for too long, your eyes get tired. You keep listening to something, something happens to your brain, starts rattling. You want quiet for some time, isn't it? Noise pollution. Too much noise, our brain cannot handle. Similarly, fragrance. People who work in fragrance factories, they want a place where there is no fragrance. And this is a modern day fashion, you know. You will find soap and shampoo that says fragrance free. Similarly, our taste buds, they have limited capacity to enjoy. And so is the touch, so is sex. All these stimulating pleasures drain our energy to some extent. Conserving it is yoga, and spending it is called bhoga. And life is a balance between these two, yoga and bhog. This doesn't mean that bhog is bad, but when you no longer get any pleasure, enjoyment in it, then you have risen above that, and you are looking for a bliss, a happiness which is beyond the senses. And to reach that highest level of human existence,
You have to close certain taps. So the ancient people said so beautifully, physical pleasure, if it is considered one unit, the pleasure or joy of samadhi is 1,000 times more than that. When you aim at higher ananda, bliss, then you give up the small thing and it doesn't even feel like you are giving up. It is not a struggle for a sadhak to let go of small pleasures, isn't it? See, like a child is so hung up on chocolates and toffees, but as an adult, even it is offered, you say, no, thank you. It no longer gives you that much pleasure. Same in brahmacharya. Brahmacharya is two things. One, as a practice where you take certain vows and put a boundary around yourself. And the boundary helps you to grow. It's like a plant having a little fence around itself so that the goats don't come and eat it away. You take certain vow so that you don't drown in a habit of pleasures, habit of enjoyment. This is one level. This also helps a person to move forward. Second level is when small pleasures don't even matter to you because you got a vision of something higher. You got a taste of a higher bliss. You don't need to rub yourself against the skin to get a pleasure, but it's a pleasure which is even bigger. A glimpse of it makes the smaller pleasure irrelevant. It doesn't even matter to you. You know, when the sunlight is there so bright, a candle is not going to bring any more light to you. So if it is there, it's not there, it becomes irrelevant. This is a higher level of brahmacharya where pleasures are irrelevant to you. Gurudev, some sannyasis move in swanky cars, lead a lavish lifestyle. Isn't it opposite to the principle of sannyas? Some sannyasis move in fancy car and stay in 5-star hotels. See, do not judge someone by their outer behaviors. You have to see beyond that. I remember once Maharshi Mahesh Yogi ji was staying in 5-star hotel in Bangalore in the 80s. That was the only 5-star hotel those days available. And the journalists came and asked, why are you staying in this 5-star hotel? And they all started asking questions like this, trying to attack him. He just smiled and said, is there any better place? You tell me, I'll stay there next time. Is there any better place? I'll stay there next time. Yes, a sannyasi is not hung over this car or that car. Oh, I have to go in bullock cart only or by paidal hi jayenge, tabhi I am sannyasi. Ye galat hai. Some people have this concept of sannyasi being like a bhikshuk sitting on the roadside. Begging is not the sign of greatness. Greatness is much bigger. Greatness is beyond riches or poverty. You cannot judge someone because they are rich, they are not enlightened, or because someone has chosen the path of poverty, so they are better. You cannot say these things. No. But if they are hung up over cars and all these things, then it's pitiable. That means their channels are not open. They have not had the highest experience of bliss. That is quite obvious. Gurudev, what are some pitfalls could derail a sannyasi from their path? Small temptations and egotism. Oh, I have big cars, I have a power and I have money. This is one type of egotism. And there is another type of egotism that says, see, I have renounced everything. There's nobody like me because I am the biggest tyagi or jnani, I am the most knowledgeable. This type of egotism can hurt a sannyasi. Egotism about his austerity, egotism about his good qualities, and comparison of his or her own qualities with others, all this can bring them down.
गुरुदेव, ज़्यादातर परंपराओं के अनुसार पुरुषों को ही संन्यास दिया जाता है। क्या प्रकृति के अनुसार भी संन्यास की यह प्रक्रिया स्त्रियों के तुलना में पुरुषों के लिए सहज है? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। कितने सारे साध्वियाँ हैं हमारे देश में, बहुत से हैं, बहुत सी सन्यासियाँ, बहुत महामंडलेश्वरी भी हैं कई हमारे देश में। ऐसा नहीं, भारत में दोनों प्रथा है। कहीं बीच में ये कड़ी कहीं समाप्त होगी। खासतौर से मंदिरों में, पुजारियों में दोनों हुआ करते थे पहले। आज भी आप बाली जाओगे, छोटा सा द्वीप है, और वहाँ आप देखोगे पुरुष और स्त्री दोनों वहाँ के पुरोहित होते हैं। भारत में मध्यकाल में ये प्रथा कहीं लुप्त हो गई, बंद हो गया था ये, मगर ऐसा नहीं है। भारत देश में स्त्री का समान अधिकार नहीं बोलूँगा, एक दर्जा ऊंचा ही रखा गया है। Gurudev, does horoscope hold any significance when one has a living master in his life? Having a living master is really the best and the highest. But all these shastras, they only complement. If they contradict, then you only take the words of the Guru. Even Shastra says this. If there is a contradiction in the Shastras, then to Guru Vakyam Pramanam. Take the words of the Guru, that is the highest Pramanam. Shastras are there, all the ancient rishis have cognized various sciences. So, whether Jyotish or Vastu or Ayurveda or Gandharva, all these, the Vedic wisdom is very vast. They have their usefulness. But for sannyasis, sadhus, for people on the path, nothing is more relevant than bhakti. And this is what the Shastras also say. Bhakti remedies all other doshas, shortcomings. Gurudev, do planetary positions affect an enlightened master? It's like asking, do weather affect? To a certain extent, weather affects everybody. When the season is cold, then even enlightened master can catch cold. If it's too hot, he would feel hot. But he would neither run away from heat nor cold. So, at any cost, he will not lose his smile or his state of mind. All these things affect only on the body level, to some extent. If at all planetary position affect, that's all be in a benevolent manner. No malefic effects will happen. Gurudev, in astrology, they talk about planetary combinations that lead to sannyas. So, do planets determine whether we can successfully walk this path? Astrology is only an indication. It says this road leads to that area and these many diversions are there on the road. Now it is up to you to take the straight road or take diversion. Astrology is never a fatalistic science. It only gives a road map to you. So a GPS is not your journey. You are not bound by it. The choices are always there. And certain things are choiceless. That's why I say life is a combination of free will and destiny. There is always room for free will. And nobody can claim that everything is my free will. There are certain lampposts of destiny as well. That one has to accept in life. Like height and weight. Your height is destiny, your weight is your free will. Gurudev, we read in spiritual book that the whole world is unreal. However, living and non-living things appear real. Could you please help us understand this? What you call as non-living is really not non-living. That also has some unit of life.
We are in an ocean of consciousness. And in some places the consciousness is more obvious, in other places it is not so obvious. If there is a dog sitting and you chase the dog, it will start howling, it will start crying. And you take an axe and go and try to cut a tree, the tree also howls, but you don't hear it, that's all. Tree also has feelings. The expression of the feelings which you see in dog is not the same what you see in the trees. Our perception is very limited. And so our judgment is even more limited. So with a limited perception and limited judgment, it's a partial knowledge. Rather more ignorance than any knowledge in it. Yeah? गुरुदेव, ये जो माया है उससे हम कैसे निकल सकते हैं? माया जानते ही निकलने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती, इतना ही समझ में आना चाहिए माया है, सच नहीं है। तो माया से निकलने की चेष्टा कहाँ होगी? तुम ये तो नहीं पूछती हो ना, अच्छा मैं सपने से कैसे निकलूं? अरे सपना समझ में आ गया, फिर निकलने की क्या बात है? कुछ नहीं करना है, मस्त रहना है, आनंदित होना है। जब तक सपना सच लगते रहे तो घबराहट होती रही, मगर जिस क्षण सपने को सपना करके जान लिया, तब तो आप सपने से बाहर आ ही गए, जाग गए। तो यही हमको समझना है कि भागना नहीं, जागना है। माया से भागने वाले माया से कभी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। क्यों माया में भाग रहे हैं ना, वो इससे बड़ी माया है। ये समझ में आ गया ये माया है तो जाग गए, जाग गए तो भागना कहाँ? फिर तो भीगेंगे, फिर भीगना है, आनंद में भीगना है। गुरुदेव, इस जन्म में अगर किसी को एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया और फिर वो अपनी इच्छा से वापस जन्म लेके आता है, तो भी क्या वो पॉसिबल है कि माया में फंस सकता है? भाई यहाँ तो सब संभावना है, मगर जहाँ तक हम जानते हैं, एक बार जो खिल गए और खुल गए परम के प्रति, वो फिर छोटी चीज़ों में पड़ेंगे ऐसा तो असंभव ही लगता है। मगर क्या कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है। यदि होता है तो हमें सिर्फ आश्चर्य ही जताना पड़ेगा उस पर। तब अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? इसीलिए जैन धर्म में स्यातवाद पर बहुत जोर दिया गया। कभी भी किसी की भी संभावनाओं को हम नकार नहीं सकते। प्रकृति में कुछ भी संभव है, फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज बोलते हैं इसलिए। यह सर्व संभावना की क्षेत्र है। ऐसे नहीं होगा माने वो एक संभावना तो हमने बंद कर दी। चित्र विचित्र चीजें होती रहती है दुनिया में, ऐसे हो भी सकता है, कुछ हो भी सकता है। गुरुदेव, यदि एक सन्यासी और गृहस्थ गुरु के प्रति समान भाव रखते हैं, समान भक्ति रखते हैं, तो क्या मुक्त होने के लिए किसी की अधिक संभावना बढ़ जाती है? अरे वो व्यक्ति पर निर्भर है। सन्यासी भी मुक्त हो सकता है, गृहस्थ भी मुक्त हो सकते हैं। गृहस्थ अपना धर्म पालन करते करते मुक्त हो सकते हैं, सन्यासी अपना धर्म निभाते निभाते मुक्त हो सकते हैं। इतना ही समझो, सन्यासी माने एक बड़ा गृहस्थ है, भगोड़ी नहीं है। घर में जो माताएं होती है या दादी होती है, जो भी बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? सबकी ज़रूरत पूरा करके फिर अपने बारे में सोचते। कई बार अपने बारे में सोचते भी नहीं। ये गृहस्थ का लक्षण है। सन्यासी का लक्षण क्या है? वो अपना कुछ है ही नहीं, सबके बारे में सोचते रहते, सबका ख्याल रखते हैं और अपने लिए उनको कुछ करना ही नहीं है, तृप्त हैं। और ये सबसे बड़ा गृहस्थी हो गई। ब्रह्मानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य महाराज ये कहते थे कि हम तो त्यागी नहीं है, ये सब महात्यागी कहते लोगों को। जो महान चीज को त्याग कर दिए
वही महात्यागी है। सबसे महान चीज तो पर ब्रह्म है, भगवान है, उसको त्याग करके बैठे, हमको क्या महात्यागी बोल रहे हो। कितना सच है, परम को त्याग करके छोटी चीज को पकड़ लिया। हम त्याग किसको करते हैं, किस चीज को करते हैं? जिसको हम महत्व देते हैं उसको छोड़ना ही त्याग होता है। अब हम इसका बड़ा महत्व देते हैं, हमने कहा इसको हमने त्याग दिया, और चश्मा हम समझते हैं मैं इसको त्याग रहा हूं। क्यों? इसको थोड़ा महत्वता देता हूं। जो चीज हमसे छूट जाती है उसको त्याग तो नहीं बोलते। आप तो ये तो नहीं कहोगे हम वो कॉटन कैंडी खाना हमने त्याग दिया। बचपन में कॉटन कैंडी है, वो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी? बुड्ढी की बाल। ये तो नहीं कहते वो बुड्ढी की बाल हमने त्याग दिया। बचपन में वो गाँवों में ये सब आता, घंटी बजती थी, वो आदमी लेके आता था बुड्ढी की बाल, और बच्चे वो आते ही आंख बड़े बड़े आंखों में जाते। ऐसे चॉकलेट है, मिठाई है, खिलौना है। हम ये थोड़ी ना कहते मैंने खिलौना त्याग दिया। अरे छूट गया भाई, ये सब जीवन में इसका कोई महत्व नहीं रहा तो छूट गया। ऐसे बचपन के मित्र, वो अपने रास्ते पे गए, तुम अपने रास्ते पे गए। आप पहले रोज रोज बात करते थे, आप पता नहीं साल 2 साल में 10 साल में एक बार बात करते हो, वो सब छूट गया, संबंध छूट जाता है। वही होता है जो बच्चे माँ के पल्लू पकड़ के घूमते थे दिन रात, बड़े हो गए तो वो अपने काम में लगे, उनके बच्चे हो गए, अभी कभी हाय हेलो होता है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में परिवर्तन होता ही रहता है। और त्याग हम उसको कहते जिसमें कोई मुख्यता हमको लगता है। तो महात्यागी कौन है? जो सबसे महत्व है उसको त्याग किए वही महात्यागी हुए। मगर जीवन में त्याग के बगैर कुछ महत्वपूर्ण चीजों को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? जो चीज तुमको पकड़ के पीछे खींच रहा है, उस श्रृंखला से, उस सलाखों से तुम्हें मुक्त होना है। उसमें थोड़ा सा प्रयत्न अपना करेंगे तो उससे लांद के हम आगे निकल जाएंगे। मान लो शराब की आदत है, अब बोलेंगे अरे ये तो छोटी चीज है, हम पीते रहेंगे, कभी नहीं छूटने वाला है। वो आदत इतना गहरी होती जाएगी दिन बर दिन। वहाँ हमको ये कदम उठा के कहना पड़ेगा हमको पसंद भी है, मैं इसको नहीं छूऊंगा। सभी ये जो हैबिट्स हैं, अभ्यास है, इससे मुक्ति के लिए त्याग की आवश्यकता है। जो हमको अच्छा लगता है मगर क्षणिक काल के लिए, वो सब त्यागने योग्य है। जप करने के लिए कुछ मंत्र गुप्त रखा जाता है और कुछ मंत्र ऐसे उपलब्ध है, ऐसा क्यों है गुरुदेव? हाँ, जो गुप्त रखते हैं वो मन के भीतर चलने लगता है, बहुत गहराई में उतरने लगता है। इसलिए पाश्चात्य देश भी ये प्रथा है कि कन्फेशन, माने अपने भीतर जो भी चीज़ें मन को परेशान कर रही उन चीज़ों को व्यक्त कर दो, समर्पण कर दो। अपने यहाँ क्या करते, सारी चीज़ें समर्पण कर दो, दोष को समर्पण कर दो। मगर मंत्र को हम गुप्त रखना चाहते हैं। क्यों? मंत्र हमको परत दर परत भीतर ले जाने में वो सहायक होता है, इसलिए मंत्र को गुप्त रखते हैं। गुरुदेव, पुरातन काल में जो ऋषि मुनि थे वो आकाश से ज्ञान डाउनलोड करते थे, हम इस जमाने में वो कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, अभी भी यही होता है। अभी भी जो भी ज्ञान डाउनलोड होता है वो आकाश से ही होता है, मगर उसको सजगता पूर्वक अनुभव करने की जो प्रक्रिया है उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान करोगे तो अंतस्फुरणा जागेगी, मन के जो आवरण है, बैल है, विक्षेप है, ये सब दूर होता है तो प्रकट हो ही जाता है। Gurudev, in Yoga Shastras, there are descriptions about various type of samadhi. Can you throw light on it? And how it can help us in as a sadhak? Dhi means intellect, samadhi means where your mind is in equanimity. Now there are different type of samadhis.
samadhi where there are ideas and thoughts, they float around. But you are witness to those thoughts. Vichara anugama samadhi. When there is vichara, means thought process is on. But as a witness, you are watching them in equanimity. No thought process is creating any emotional disturbance inside of you. This is vichara anugama. Savitarka samadhi is where there is logic. The conscious logical mind is still active. Savitarka samadhi. Nirvitarka samadhi is you have transcended the thoughts, you have transcended the logical mind as well, the intellect as well. And that is the real higher states of samadhi, where you transcend the logic, the thoughts and feelings. Even feelings are transcended in samadhi. And where you feel that there is center everywhere and circumference nowhere. You feel you are everywhere, yet you are nowhere. I am and I am not. That experience that I am, because it is not inertia where you don't know anything. But I am not, because I am not in the sense of any localized identity. There is only easeness. One is I am, amness, another is easeness. Whenever you are little bit more conscious, you are in the space of I am happy, I am unhappy, I am enlightened, I am not enlightened, I am this, I am that. The I am is there, the aham is there. When that leave way to a space which is simply ease, things are, that's all, that's it. Things are. It is as such. That is the samadhi. Where there is no vikalpas, there is no vichara, nirvichara. Nirvichara vaisharadya adhyatma prasad. That nirvichara samadhi, and this is the spiritual gift, grace of spirituality. Gurudev, you had mentioned earlier that we exist in 5 dimensions at the same time. How is this possible? The world of our experiences has limited dimensions. Our bandwidth is very limited. You have energy, you have aura, which you are unable to see from a naked eye. A cat can see more than you. An owl can see more than you. Their bandwidth is higher. We gauge our world by our perception, and our brain is nothing but a frequency analyzer. We operate within the limited frequency. World is beyond the conceived and perceived frequencies. The existence is far beyond the conceived frequencies. And if you see the whole wave function or the energy field by which the entire universe is, and our perceptual ability is not even 1%. So what we know is less than 1%, what we cannot perceive is many times more than what we perceive. So in this sense, there are many dimensions, there are many shadows of yours. I hope one day science will discover all this. Science is already on this path of discovering more secrets. The more secrets are unveiled, the more unknown areas we encounter with. Gurudev, are siddhis like levitating and teleportation etc. real? Are they sign of progress on the path? You're physically levitating or doing some siddhis are not sign of your progress. They are skills. Like if you are asking me, is playing guitar sign of human being? I will have to say no. You can be a human being even without learning guitar. Yes, only human beings can play guitar. That's good. So people can exhibit extraordinary powers, and siddhis do manifest around enlightened people. But if someone claims,
I am enlightened, I have this siddhi, stay away from. One who has real siddhis will never try to exhibit. Exhibition shows that they are not still out of Maya. The path of a seeker, many siddhis will come, many miracles happen. It's a normal thing. But if you are hanging on to it, I tell you, soon you will come down the ladder. One who aims at the ultimate will not get deviated by these miracles. But miracles are in abundance in life. Any devotee can vouch for it. You can fulfill so many people's wishes when you are on the path, when you are a sadhak, when you are a siddha. But you don't hang on to it. It just by the way, it's a sort of side dish. You can't make it a main course. भोजन में चटनी की मात्रा अलग होती है, वैसे ये सब होने चाहिए, ठीक है ना? गुरुदेव, माया का आधार परमेश्वर है, तो माया हमें भ्रमित क्यों करती है? ताकि तुम हो, इसीलिए तुम्हें भ्रमित करती है। जिस दिन तुम जाग के जानोगे मैं हूं ही नहीं है, सब कुछ ईश्वरी है, तब कहाँ माया रहेगी?